हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन consists of operator and operand, constant or variable. For example, 10 plus 20 is an expression in which plus is an operator whereas 10 and 20 are operands. उसके बाद आते हैं ऑपरेटर. An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific operation like mathematical operation, असाइनमेंट ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, etc. अब यहाँ पर ऑपरेटर्स की जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वन बाय वन जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, etc. अब यहाँ पर मैंने टेबल बना है जो कि मैंने एक वेरिएबल लिया है a एंड वेरिएबल b लिया। अब वेरिएबल को मैंने जो है 10 वैल्यू दिया और b की जो वैल्यू है वो 20 है। अब यहाँ पर मैंने टेबल बनाया ऑपरेटर्स जो कि प्लस यूज फॉर एडिशन, a प्लस b विल गिव 30, a माइनस b विल गिव 20, a मल्टीप्लाई बाय b विल गिव 200 and b divided by a will give 2. अब b परसेंट है will give you 0. उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस डिटरमाइन विच ऑपरेटर यूज फर्स्ट in compound expression. There are two precedence level for arithmetic operators that are high and low. The high priority operators are steric, divide, percent, and low priority operators are plus and minus. When a compound expression is evaluated, all high priority operations are performed first in order in which they appeared and then all low priority. अब सबसे पहले जो को एग्जांपल में हम सॉल्व करते हैं वो हाई प्रायोरिटी को, उसके बाद जो है लो प्रायोरिटी को। अब एक एग्जांपल जो है यहाँ पर मैंने लिखा एक एग्जांपल, उसको सॉल्व करते हैं। अब 60 माइनस 4 प्लस 2 स्टेरिक 10 प्लस 5 परसेंट 2। अब सबसे फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज सॉल्व। उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पर सेकंड जो सॉल्व होगा वो 5 परसेंट 2 एंड थर्ड जो है वो 60 माइनस 4 इज सॉल्व एंड फोर्थ जो है वो 56 प्लस 20 इज सॉल्व। आंसर यहाँ पर 77 आ जाए जो है वो चेंज है। अब यहाँ पर मैंने दो वैल्यू जो है 4 प्लस 2 जो है वो मैंने ब्रैकेट में लिया। अब सबसे फर्स्ट जो है वो सॉल्व होगा वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है चाहे माइनस की हो या प्लस की हो उसको सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेट्स वैल्यू। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ब्रैकेट्स वैल्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज सॉल्व एंड थर्ड जो है वो 5 परसेंट 2 इज सॉल्व एंड फोर्थ 60 माइनस 60 इज सॉल्व और आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। This sign is used as assignment operator in C language. It is used to assign a value to a variable. For example, z here 10 is a value which is assigned to a variable z. उसके बाद आते हैं the value that can be written on the left hand side of assignment operator is known as L value, and the value that can be written on the right side of assignment operator is known as right value. L value can never be a constant value and can never be an expression. Example 10 is equal to a is a wrong statement because L value is a constant. It can be written as a is equal to 10. Similarly, b plus c is equal to a is a wrong statement because L value is an expression. It should be written a is equal to plus bc. a is equal to b plus c. उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर आते हैं प्लस इज इक्वल टू इज यूज फॉर एडिशन असाइनमेंट, माइनस इक्वल टू इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। The above operator are used whenever the same variable operators on both side of the operator. For example, a is equal to a plus 10 can be is written as a plus is equal to 10. अब अगर इस तरह के a इज इक्वल टू a प्लस 10 तो इसको जो है प्रोग्राम इस तरह लिखना है कि a प्लस इज इक्वल टू 10। और अगर सेम इसी तरह x इज इक्वल टू x माइनस वाई कैन बी रिटन एज x माइनस इज इक्वल टू y। मल्टीपल असाइनमेंट, मोर देन वन असाइनमेंट ऑपरेटर appears in an expression.
Then each assignment operator performs an assignment operator. Example: A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 50. Here the value 50 is assigned to variable D, then the value of variable D is assigned to variable C, and so on. Here relational operators to compare two values of same type. When they are used in an expression, they return a Boolean value 0 or 1, which states the result of the comparison. Example: 4 is greater than 3 can be read as 4 is greater than 3, that returns true or 1. Following relational operators are used in C. अब यहाँ पर greater than operator, it is a type of relational operator and sign is used for greater than. It returns true if first value is greater than second value, otherwise it returns false value. True is represented by binary 1 and false represented by binary 0. For example, अब यहाँ पर 100 is greater than 20 will return true. 30 is greater than 30 will return false because 30 is equal to 30, not greater than. And 10 is greater than 5 will return true. उसके बाद आते हैं second operator जो कि greater than or equal to. It is a type of relational operator and sign is used for greater than or equal to. It returns true if first value is greater than or equal to the second value. Is represented by binary 1 and false is represented by binary 0. For example, अब यहाँ पर आते हैं example: sum is greater than 20, 100 is greater than and equal to 20 will return true. अब 30 is greater than and equal to will return true, 1a. अब यहाँ पर 10 is greater than and equal to will return true. Less than operator. It is a type of relational operator. Sign is used for smaller than. It returns true if first value is smaller than second value. Otherwise, it returns false value. True is represented by binary 1 and false is represented by binary 0. For example, 100 is less than 20 will return false, 0. And 30 is less than 30, 0, false. 10 is less than 5 will return false. उसके बाद आते हैं less than or equal to. It is a type of relational operator. Less sign is used for smaller than or equal to. 100 is less than and equal to 20 will return false. 30 is less than or equal to 30 will return true क्योंकि यहाँ पर जो है 30 इक्वल है 30 की true. उसके बाद 10 is less than or equal to 5 will return false. Equal operator. Sign is used for equal to. It returns true if the first value is equal to the second value. For example, 100 is equal to 20 will return false. अब 30 is equal to 30 will return true. 10 equal to 5 will false. उसके बाद आते हैं not equal to operator. Not equal sign is used for not equal to. It returns true if first value is not equal to the second value. Otherwise, it returns false value. उसके बाद आते हैं example: so is not equal to 20 will return true. उसके बाद 30 is not equal to 30 will return false क्योंकि दोनों equal है.